अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं और पिछले बाइपर्टाइट में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से संबंधित निकाला था, जिसमें कि स्टेट बैंक के पेंशनर्स के लिए खास तौर पे था जो ऑफिसर स्केल 2 से अबव हैं, स्केल 5 तक, उनको 10th और 11th बाइपर्टाइट में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविजन किया गया था। लेकिन पहले पेंशन 40% ही होने की वजह से उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का सुपरएनुएशन बेनिफिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पेंशन में कोई अंतर नहीं आता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद भी अपने पेंशन को रिफिक्स नहीं करवाया। लेकिन जब ये 50% पेंशन का डिसीजन हुआ स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक के पेंशनर्स की एसोसिएशन द्वारा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन भी दिया गया। और ये क्लैरिफिकेशन न केवल स्टेट बैंक के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि ये 10th और 11th बाइपर्टाइट के जो सेटलमेंट्स हुए थे की जानकारी सभी बैंकों पर एप्लीकेबल होगी। खास तौर पर 11th बाइपर्टाइट में जो एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविजन हुआ, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसकी पीरियडिसिटी को भी 3 साल से 2 साल कर दिया गया था, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको पेंशनर्स के बुलेटिन में बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उस बुलेटिन के एक्सट्रैक्ट को ही आपके सामने प्रस्तुत करूं और उस पर चर्चा करें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का रिफिक्सेशन होना चाहिए था। खास तौर पे पेंशनर्स के लिए जो स्टेट बैंक के पेंशनर हैं स्केल 2 से स्केल 5। आइए उस बुलेटिन के एक्सट्रैक्ट्स को पॉइंट वाइज समझें। दोस्तों, ये एसबीआई पेंशनर्स न्यूज़ बुलेटिन है अक्टूबर 2023 का। Gist of instructions on additional stagnation increment to employees who were in service as on 1st November 2017, as provided under 11th Bipartite Settlement and public 8th Joint Note dated 11th November 2022, including subsequent clarifications issued by Indian Bank Association. Actual eligibility dispensation as per old norms. Employees who were actually eligible for additional stagnation increment effective from 1st November 2000, technical and subordinates employees who are already in receipt of 8th stagnation increment are eligible for 9th stagnation increment of rupees 1990 and rupees 1000 respectively, effective from 1st November 2017 or 2 years after reaching 8th stagnation increment, whichever is later. अब ये रिवाइज जो इंस्ट्रक्शंस थी, क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट कैडर एम्प्लॉयज हु रीच्ड 8th stagnation increment basic pay of rupees 42,020 and 23,785 respectively on or before 1st November 2015 are eligible for 9th stagnation increment with effect from 1st November 2017. Officer JMJS 1. Officer in JMJ grade scale 1 and who have moved to scale 2 and who have received 4 stagnation increment shall receive the 5th stagnation increment of rupees 2,220 2 years after receiving the 4th stagnation increment or with effect from 1st November 2017, whichever is later, will draw monetary benefits which include arrear of the salary. इसमें revised जो हुई है instructions clarification के बाद, officers MGS 1 who reached 4th stagnation increment basic pay of rupees 51,490 on or before
1st November 2015 are eligible for 5th stagnation increment with effect from 1st November 2017. उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 में ऑफिसर MMGS scale 2 and who have moved to scale 3 and who have received 4th stagnation increment shall receive the 5th stagnation increment of rupees 2,220 2 years after receiving the 4th stagnation increment with effect from 1st November 2017, whichever is later, and will draw monetary benefit which include areas of the salary. Officer MMGS 2 who reached 4th stagnation increment basic pay of rupees 57,330 on or before 1st November 2015 are eligible for 5th stagnation increment with effect from 1st November 2017. स्केल 3 की जो पोजीशन है उसमें ऑफिसर्स इन MMG स्केल 3 and who have received 5 stagnation increments shall receive the 6th stagnation increment of rupees 2,500 2 years after receiving the 5th stagnation increment or with effect from 1st November 2017, whichever is later, and will draw monetary benefit which include areas of the salary. Officer MMGS 3 who reached 5th stagnation increment basic pay of rupees 58,790 on or before 1st November 2015 are eligible for 6th stagnation increment with effect from 1st November 2017. दोस्तों स्केल 4 के ऑफिसर्स के लिए पुरानी इंस्ट्रक्शंस थी ऑफिसर इन SMG स्केल 4 and who have received 1 stagnation increment shall receive the 2nd stagnation increment of rupees 2,730 2 years after receiving the 1st stagnation increment or with effect from 1st November 2017, whichever is later, and will draw monetary benefits which include areas of the salary. अब इसमें रिवाइज जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफिसर्स SMGS 4 who reached 1st stagnation increment basic pay of rupees 60,820 on or before 1st November 2015 are eligible for such 2nd stagnation increment with effect from 1st November 2017. Employees who are actually eligible for additional stagnation increment effective during the period between December 2017 and October 2020. All clerical and subordinate employees who reached 8th stagnation increment and all officers employees from scale 1 to 4 who reached the last stagnation increment in their respective scales between the period December 2015 and October 2018 shall be eligible for additional stagnation increment after 2 years of reaching the maximum stagnation. अब इसमें स्केल 4 तक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एक जैसा ही ट्रीटमेंट है, लेकिन स्केल 5 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में. Eligibility for new stagnation increment to the officer is SMGS 5. Officer in SMG scale 5 shall be eligible for 1 stagnation increment of rupees 2,790 2 years after reaching the maximum of scale or with effect from 1st November 2020, whichever is later, and will draw monetary benefit which include areas of the salary. इसमें रिवाइज जो इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन के बाद दी गई हैं, ऑफिसर्स SMGS 5 are eligible for 1 stagnation increment and consequential monetary benefit 2 years after reaching the maximum of scale or 1st November 2020, whichever is late. इसमें एरियर वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल
मॉनेटरी बेनिफिट 1 नवंबर 2020 से ही मिलेगा और इस तरह जो 17 से 20 के बीच में रिटायर हुए हैं उन लोगों को का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट्स इन केस of those who retired between 1st November 2017 and 31st October 2020, all superannuation benefit like provident fund, difference in gratuity if applicable, difference in leave encashment, division in pension, revised commutation if any, from the date of eligibility of their additional stagnation increment or 1st November 2017, whichever is later to be paid. ये स्केल 1 से 4 तक और अवार्ड और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए ये एप्लीकेबल है मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, लेकिन स्केल 5 के लिए नहीं है। ये 4 स्टेप अप्लाई करने जरूरी हैं, जिसमें कि पहला स्टेप होगा टू अरेंज फॉर sanction of additional stagnation increment as per the actual eligibility under board dispensation. Disbursement of manual payment arrear of salary after sanction of including payment of difference in leave encashment. Deduction of members and bank contribution of provident fund and TDS to be ensured simultaneously. PPG department to be advised for further process of terminal benefits such as provident fund refund, difference in gratuity and difference in commutation if applicable, and revision of pension from the eligible date of additional stagnation increment. तो ये रोल जो है ना एक्चुअल लास्ट ब्रांच जिसमें सर्व किया है एम्प्लॉय और वहाँ से रिटायर हुए हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल है। जो इसमें नोट है ये पूरी तरह से यहाँ पर ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दिया गया है। The eligible additional stagnation increment in respect of SBI officer drawing basic pension of rupees 40,000 to 25 and those with average substantial salary between 80,000 for 51 and 1 lakh 562.5 will not have any impact on pension as their basic पेंशन is fixed at rupees 40,000 to 25. Minimum payable pension who are covered by 40% clause. However, the average substance salary need to be updated with eligible additional stagnation increment for the purpose of effecting revised family pension at the rate of 30% without any ceiling. दोस्तों जो ये लाइन ऐड कर दी गई है इसमें कि those with average subsistence salary between 80,451 and 1,562.5 will have no any impact on pension as their basic. ये बेसिक पे फिक्स होने का उस समय था जब 40% वाली क्लॉज थी। 7 नवंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अब स्थिति बदल जाएगी। तो जिन लोगों को ये 40,225 पेंशन फिक्स की गई थी उनको भी अब फर्क पड़ेगा इस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का, क्योंकि अब 50% पेंशन मिलेगी तो उनकी पेंशन दोबारा से फिक्स होगी और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनको मिलेगा। साथ ही फैमिली पेंशनर्स को भी 30% बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फिटमेंट जरूरी है सभी के केस में। After release of additional stagnation increment and monetary benefit thereof in respect of employees who were in service on 1st November 2017, the stagnation increment already drawn as per the old norms shall be readjusted as per the new norms from 3 years periodicity to 2 years periodicity from the date of reaching their maximum of the scale. ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्लॉज है कि पीरियडिसिटी पहले 3 साल की थी अब उसको घटा करके 2 साल का कर दिया गया है। इसलिए इस के हिसाब से पीरियडिसिटी का एडजस्टमेंट जरूरी है। उसमें क्लरिकल स्टाफ का टोटल 8 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थी, 5 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट once in every 3 years
4 नॉर्म्स में, नए नॉर्म्स में 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होंगे। ऑल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट स्टैग्नेशंस वंस इन एवरी 2 years। तो ये न्यू नॉर्म्स के हिसाब से फिर से स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टोटल जीएमजीएस 1 के केस में टोटल 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं। 3 years की पीरियडिसिटी थी। अब 5 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होंगे और सभी में 2 years की पीरियडिसिटी होगी, जिसका कि नोशनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक बार। स्केल 2 में 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थी, 3 years का था पीरियडिसिटी और every 3 years and 4th stagnation increment after 2 years। अब जो नया वाला सिस्टम है, all stagnation increment 5 stagnation increment once in every 2 years। स्केल 3 में टोटल 5 stagnation increment हैं, जिसमें 4 stagnation increment in every 3 years and 5th stagnation increment after 2 years। अब all stagnation increment once in every 2 years। स्केल 4 में एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थी 3 साल के बाद, वो अब 2 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल के पीरियड से। इससे भी एडजस्टमेंट करके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का पीरियड पीछे हो जाएगा और जो लास्ट एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 11 बाइपार्टाइट में दी गई है, उसका बेनिफिट 1/11/2017 से भी मिल सकता है, जिन लोगों को प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दी जाए। The benefit of such readjustment stagnation increment shall be notional effect from 1/11/2017 and the monetary effect, if any, shall be payable from 1st November 2022। यदि किसी का पहले भी एलिजिबल हो जाता है तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट 1/11/2020 से ही मिल पाएगा। In case of the date of release of stagnation increment after adjustment falls after 1/11/2020, the monetary benefit will be passed from date of release. No monetary benefit and arrear for the period earlier to 1st November 2020 will be paid on account of readjustment of stagnation. For all employees who were in service on 1st November 2017 but not on 1/11/2020 and otherwise eligible, the monetary benefit in pension are to be passed on from 1st November 2020. Such employees shall not be eligible for any benefit in gratuity, pension, commutation and leave encashment or any other superannuation benefit on account of such readjustment of stagnation increment। उनको कोई भी बेनिफिट इसमें से नहीं मिल पाएगा, केवल इस रीएडजस्टमेंट का उनको बेनिफिट 1/11/2020 से ही पास ऑन हो पाएगा। रोल ऑफ लास्ट सर्व ब्रांच of employee notional eligibility to arrange for sanction or readjustment of stagnation increment with reduction of periodicity under new advice to the PPG department at LHO for revision of pension effective from 1st November 2020. Note: a reference is invited to e-circular number CDO Machadi EM 23/2024 dated 1st August 2020, where it is mentioned that it has been decided by the competent authority that all payment related to the staff and staff pensioner shall be processed exclusively through HRMS with effect from 1st August 2023. That is, all payment to the staff and staff pensioner outside HRMS will be stopped। ये HRMS के थ्रू ही सारी पेमेंट। Sanction of additional stagnation increment where applicable and reworking of stagnation, ये फॉर्मेट भी उन्होंने लगाया है। कुछ लोगों ने पीछे वीडियो में कहा था कि कोई फॉर्मेट हो तो वो दे दें, तो ये इसलिए मैं इस फॉर्मेट को भी जो कि बुलेटिन में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट को भी लगा दिया है। उसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके डिटेल है, पीएफ नंबर और डेट ऑफ प्रमोशन
pension account number, PAN number, reached maximum in scale of pay on graduation, CIB increment, date of annual increment scale, detail of UL sub sabbatical leave award, details of the UL, ये सब डिटेल्स उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. पोस्टपोनमेंट ऑफ इंक्रीमेंट डेट ड्यू टू कॉलम 8, date of reaching maximum in present, relinquishment of promotion submitted after reaching maximum scale of pay in each grade. ये सब डिटेल उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस डिटेल को प्रोवाइड करने के बाद एक्चुअल एलिजिबिलिटी ऑफ एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, एग्जिस्टिंग डिटेल इसमें एक कॉलम में दी जाएगी और एडिशनल एलिजिबिलिटी डिटेल दूसरे कॉलम में होगी. कब से मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, इफेक्टिव फ्रॉम एंड रिवाइज बेसिक पे कितना होगा, ये सब डिटेल स्केल 1 2, ऑफिसर 3, ऑफिसर 4 और अवार्ड स्टाफ. नोशनल एलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द रिफिक्सेशन ऑफ स्टैग्नेशन, ये टेबल भी दी हुई है. एग्जिस्टिंग स्टेज वाइज डिटेल और रिवाइज और रिफिक्स डिटेल, नोशनल एलिजिबिलिटी, मॉनेटरी बेनिफिट, ये सब डिटेल टेबल बनानी पड़ेगी. ये काम रिकमेंडिंग अथॉरिटी जो ब्रांच से रिकमेंड करेंगे और अप्रूव एंड सैंक्शन अथॉरिटी का. ये जब दोस्तों ये डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सेल्फ कंटेंट है और इससे काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी. अगर आपको पहली बार इस वीडियो को देखने से समझ में नहीं आता तो इसको स्टेप वाइज एक दो बार फिर से देखें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद भी आई होगी. अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने साथियों में शेयर भी करें. यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें. जब कभी भी कमेंट करें तो अपने इंडिविजुअल पे स्केल और उसके बारे में डिटेल अवश्य दें ताकि आपको सही जवाब मिल पाए. फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशनर्स के मामलों से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.